अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप कि आज की वीडियो जो है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग साबित हो। टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी। सो आज की जो वीडियो है वो वन प्रोडक्ट मेकअप के साथ है, जिसके बारे में मैं अपना थोड़ा सा पर्सनल रिव्यू देने लगी हूँ। एंड ऑल्सो दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बिकॉज the product which I am talking about today is all brought by me myself. खुद से मैंने परचेज़ की थी. This is the product which is Glam Girl by Mary Saqib की Night Glam palette, and I have done my whole makeup with this palette. Look at the makeup, and I'm pretty much ready to go anywhere outside because I'm not going over to a wedding function. कहीं भी बाहर जाने के लिए, if you are a job going person, if you are a university student, you can definitely get your hands on this palette. This is very affordable. उसके साथ साथ ये एक पैलेट के साथ आप अपना सारा का सारा मेकअप जो है वो बहुत easily कर सकते हैं. You don't even need a brush, you don't even need more things with it. Very easy to carry and very minimal product. So let's jump right into the tutorial. और मैं करूँगी अब आपके सामने मेकअप. एक साइड में ब्रश के साथ फाउंडेशन अप्लाई करूँगी और एक साइड में मैं फिंगर्स के साथ भी ब्लेंड करके आपको दिखाऊंगी. दोनों में कुछ खास फ़र्क नहीं है. द प्रोडक्ट इज़ सो अमेजिंग. सो लेट्स जंप राइट इनटू द ट्यूटोरियल. लेट्स स्टार्ट ओवर विद द स्किन केयर. और यहाँ पर मैं अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ. आपको जो भी सूट करता है आप वो लगा सकते हैं. और उसके साथ जो है वो कोशिश ये करनी है कि आपकी स्किन की जो बेस है वो अच्छे से बन जाए. इसके बाद मैं सनब्लॉक यूज़ करूँगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छे से जो है वो हमने सनब्लॉक को स्किन में पेनिट्रेट कर लेना है. ओके गाइस, सो आफ्टर प्रेपिंग अप माय स्किन, यूजुअली मैं अपनी स्किन पे बहुत ज़्यादा प्राइमर नहीं लगाती व्हेन एवर आई एम डूइंग अ डेली मेकअप लुक, या मैं कहीं नॉर्मली बाहर जा रही हूँ किसी से मिलने के लिए, या इफ़ आई एम गोइंग टू वर्क और anywhere. So if that is not a wedding look, then I don't usually apply primer. So this is that miracle product which I was talking about कि ये बहुत ही amazing सा miracle product है which is very pocket friendly and also this is very easy to carry. मेरे पास इसके मल्टीपल और भी प्रोडक्ट्स हैं. दो और मेरे पास इनकी पैलेट्स मौजूद हैं. दिस इज़ बाय ग्लैम गर्ल बाय मेरी साकिब. और ये पैलेट इतनी हैंडी है कि ये एक पैलेट के साथ आप अपनी पूरी डेली लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. सो यू कैन ईजिली कीप इट इन योर बैग एज वेल. समटाइम्स आपको टचअप की ज़रूरत पड़ जाती है वाइल वर्किंग. इफ़ यू आर अ जॉब गोइंग पर्सन तो आप तब भी इसको बैग में रख सकते हैं. इफ़ यू आर अ यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट और आपने हल्के हल्के से टचअप्स करने हैं बिकॉज यूनिवर्सिटी में तो ऑलरेडी पूरा दिन गुजर जाता है. सो इफ़ यू वांट टू टच योर फेस अप विद मेकअप तो आप ये वाली पैलेट बहुत ईजिली अपने बैग में कैरी कर सकते हैं. एंड ऑटोमेटिकली आपको नज़र भी आ रहा होगा हाउ कॉम्पैक्ट दिस इज़. सो यू हैव गॉट न्यूट्रलाइजर हेयर, फाउंडेशन हेयर, cream highlighter here, lip and cheek stain here, then you have bronzer here for the contouring and for even filling up your eyebrows. So let's start working it. सबसे पहले तो न्यूट्रलाइज़र लूँगी मैं और न्यूट्रलाइज़र लेके I will be applying this neutralizer under my eyes ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि how this works. ये थोड़ा सा येलो और पेल येलो अंडरटोन में है तो इसके साथ बहुत अच्छी जो है ना वो कलर करेक्शन भी हो जाती है. ऑल्सो इट हाइड्स द डार्क सर्कल्स वेरी नाइसली. सो यू कैन सी द डिफरेंस वेरी क्लियरली. यहाँ पर मेरे डार्क सर्कल्स हैं, यहाँ पर डार्क सर्कल्स आर टोटली कवर्ड. सो मैं यहाँ पर भी न्यूट्रलाइज़र लगा के आई विल बी बैक. सो आई एम डन विद द अदर आई एज़ वेल. और इसी न्यूट्रलाइज़र को लेके मैं कुछ अपने डार्कर एरियाज़ को जिस तरह मैं कलर करेक्शन करती हूँ उस तरह से आई एम गोना अप्लाई दिस न्यूट्रलाइज़र अराउंड माई नोज़, अराउंड माई लिप्स, a little bit on my chin as well and a little bit over here just to make sure that everything is nicely hidden. See. Now after using this, next I'm going to be using other different finger to apply my foundation. My mirror is over there. So I'm going to blend that. You can also use your fingers to blend it, but since I am right now at home, so I am going to use my brush to blend that out. If you have applied moisturizer generously and moisturize your skin properly, तो ये बहुत अच्छे से
मेल्ट इन हो जाएगा। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है। वाओ, just look at the coverage. Awesome. If your skin is oily, you definitely need a powder to set your face. Any powder can work. It doesn't matter that if it is a glamorous face or any other. So it's in my hand already, so I'm going to use this to lightly set my face. Okay, so after using this, I'm going to take my blush, lip and cheek blush, and we are just going to apply few dots. No brush needed. Wow. जितना मज़ा फिंगर्स के साथ मेकअप करने का आता है ना, उतना मज़ा ब्रश के साथ भी नहीं आता। यू कैन सी हल्का सा टिंट भी आ चुका है मेरे फेस पे। एंड इफ़ यू वांट टू बिल्ड दैट अप, यू कैन डेफिनेटली पुट अ लिटिल बिट मोर ब्लश over there and over here as well. Moving on to the contour. I'm going to lightly contour my face. Doing makeup while using phone or looking inside the phone while doing makeup, it's the most difficult thing, so you always need a mirror. Either it is behind the screen or either it is in your hand. You definitely need a mirror, otherwise the makeup will be not blended, obviously. So I'm done with the contouring also. Now I'm going to use this same product and do like this with the thumb, and we will be applying like so. Can you see the lines? And then we can simply blend that. So even if you don't need to carry your brush, you can definitely use your fingers. I'm gonna contour my jawline as well. Moving on with the next, I will be using my highlighter, but I definitely need to clean up my hands first. So let's apply this beautiful cream highlighter. This also blends like a cream and a dream. Wow. Can you see the glow? Just brings out the glow within. अच्छा, इसके बाद जो है वो definitely I use my pencil, but आज मैं pencil भी use नहीं करूँगी eyebrows में. I'm going to use my spoolie. So I'm gonna dip in my brush in the bronzer, and now I'm going to use this contour shade for a little bit of detailing in my eyebrows. Since we don't want to use any other product and we are doing the makeup, full face of makeup with one product, so I would like to use it. I am doing a daily makeup look, so I will not be making my eyebrows too dramatic. I just need a little bit of shaping, a little bit of contouring, and I will be done. So let's brush this up. So
So you can see that's a multi-purpose palette. We can even make our eyebrows with it. So this bronzer right here really worked for me. Okay, so let's do one more thing, that is that we can apply this same highlighter on our underbrows, sorry. And we just want to highlight this part, and this looks seriously wow, stunning. You can see the glow. Okay, so the next thing which I would like to do here is apply a little bit of this cheek tint and see if it makes some difference on my eyes as well. बिल्कुल flat eyes मुझे पसंद नहीं है. Even if I am going out somewhere, I apply a matte one shade to get ready. See, this one is totally looking white. This one is actually having some pinkish tint, so that is why I really love it. So I'm done with a little bit of tint. Now let's try the brown bronzer as a liner. Again, applying the liner in the phone is the most difficult thing ever. Just look how cool this looks. So I am gonna outline my lips with the same brush. I'm not going to use any lip brush for that. With the brown contour color, on the edges I have done the brown color, and now I'm gonna take my fingers, dip them into the lip and cheek tint. Wow. So I'm gonna pack in a little bit of neutralizer. Only in the center where I have applied the tint. Again, going to put my cheek tint. The neutralizer actually helped me tone down the shade of this tint, जो कि मेरी लिपस्टिक के लिए अच्छा लगता. Otherwise it was very red. And this is how you can get ready with just one palette, that is Glam Girl by Maryam. And you can see that I look presentable. I can go anywhere I want. My makeup is on, and I've also applied some eye shades as well using the same palette. Everything inside this palette is cream, not powder, so get your hands on it. It's very truly affordable and very easy to carry. So I hope that you enjoyed today's one palette tutorial, and I will be back with such more tutorials very soon. So if you like today's video, please don't forget to like it, comment down, and let me know what kind of more tutorials you want me to create for you. So this is a little hairstyle I did before coming over to recording and shooting this tutorial.
ओके गाइस, सो ये थी आज की मेकअप लुक। आई होप कि वन प्रोडक्ट मेकअप लुक जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। आई एम प्रिटी मच रेडी टू गो एनीवेयर। बहुत ज़्यादा मैं मेकअप के साथ यूजुअली बाहर जाती भी नहीं हूँ, एक्सेप्ट फॉर वेडिंग्स। वेडिंग्स में तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ग्लैम लुक करने का दिल भी चाह रहा होता है, और सिंस मौका भी मिल रहा होता है, सो आई डेफिनेटली गेट रेडी ऑन वेडिंग्स। सो दिस इज़ माई डेली मेकअप लुक। आप लोग भी इस वन प्रोडक्ट के साथ ये लुक जो है वो अचीव कर सकते हैं। आई होप कि आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स जो हैं वो मज़ीद आने वाले हैं। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।